Good afternoon, everyone. In geography, we are covering the seventh chapter, and we are learning about mineral resources in India. We have covered ferrous metals, and we are into non-ferrous metals now. Basically, today what we are going to learn is about energy resources. हम उन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे जो हमारे एनर्जी का सोर्स है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. ओके, सो मिनरल फ्यूल्स हम किन्हें कहते हैं? मिनरल फ्यूल्स वो मिनरल्स है जिनसे हमें फ्यूल मिलता है. सो मिनरल फ्यूल्स आर असेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर, and power is required for various things like required for agriculture, industry, transport and other sectors of the economy. हर जगह पावर की ज़रूरत पड़ती है और इस पावर को जिन मिनरल्स के ज़रिए जनरेट किया जाता है वो एनर्जी रिसोर्सेस मिनरल फ्यूल्स कहलाते हैं. मिनरल फ्यूल्स में आते हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड वन मोर थिंग जो इसमें जो इसमें अब ऐड होने लगा है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स. न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स वो हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में मिनरल्स यूज होते हैं, लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स हैं. नाउ ऑल दीज फोर कैटेगरीज, नाउ समटाइम्स maybe in class 10th you have learned about conventional and non-conventional, ऐसा डिवीजन हुआ करता था. कन्वेंशनल क्या होता है? दिस वर्ड कन्वेंशनल मीन्स एनीथिंग जो कि यूज हो रहा हो. ओके, सो वो कन्वेंशनल कहलाएगा जो कि एवरीडे यूज हो रहा है, जो कि पॉपुलर है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं, दैट इज कन्वेंशनल. ओके, सो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आता था, नॉट न्यूक्लियर. न्यूक्लियर को नॉन कन्वेंशनल में अभी तक रखा जाता था, बट हर जगह हम देख रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरीवन इज नाउ यूजिंग न्यूक्लियर. उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर अब नॉन कन्वेंशनल नहीं, वो एक कन्वेंशनल तरीका हो गया है. ओके, तो ये चार तरह के जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर. ओके, तो इनके लिए हमें मिनरल्स की जरूरत है. सो वी लर्न अबाउट दिस मिनरल्स. दिस कन्वेंशनल सोर्सेस आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. ये चारों कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं एंड ऑल फोर आर एग्जॉस्टिबल. ये इंपॉर्टेंट है. एग्जॉस्टिबल मीन्स वंस ओवर फॉर एवर. ओके, वो हमें बाद में दोबारा हासिल नहीं हो पाएंगे thousands and thousands of years बाद. Okay, so in a way we can say once these minerals they are finished, okay, we cannot have them again. So एक बार हम कोल को यूज करके एनर्जी अभी बना तो रहे हैं, but once coal is over we will not be able to get coal again. Same is the case with petrol and natural gas. Okay, let's first learn about coal. कोल के बेसिकली दो टाइप्स हैं और ये टाइप्स एक तो उसकी क्वालिटी के टाइप्स है, लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट. कई जगह आपने पढ़ा होगा फोर्थ क्वालिटी की पीट, बट पीट बहुत लो क्वालिटी कोल होता है एंड मेनी टाइम्स इट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड कोल. ये कार्बन कंटेंट के ऊपर है, किसमें कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, किसमें कितना कम मॉइस्चर है. एंथ्रासाइट में सबसे कम मॉइस्चर होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, ज़्यादा देर तक वो बर्न करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है. बिटुमिनस इज सेकेंड, लिग्नाइट इज थर्ड, पीट इज वेरी लो क्वालिटी. इनफैक्ट ब्राउन कोल, समथिंग बिटवीन वुड एंड कोल विच इज नॉट एग्जैक्टली कोल, अभी बन नहीं पाया है, सो दैट इज कॉल्ड पीट. ओके, नाउ कैसे कब फॉर्म हुए टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो एक पुराना कोल है जो पुराने समय में फॉर्म हुआ, दैट इज गोंडवाना डिपॉजिट्स में है. ओके, एंड एक बाद में दैट इज टर्शरी डिपॉजिट्स. ओके, टर्शरी डिपॉजिट्स ये उतने पुराने नहीं हैं. द ईयर हैज नॉट बीन, द पीरियड हैज नॉट बीन मेंशन, बट आई थिंक इट इज 55 मिलियन ईयर्स पहले टर्शरी डिपॉजिट्स हुए थे एंड गोंडवाना उससे भी पहले हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट. ओके, सो ये बहुत पुराने हैं, इसीलिए ये बेटर क्वालिटी होगा. ये बाद में फॉर्म हुए हैं,
दैट इज व्हाई वी कॉल देम टर्शरी। टर्शरी इज एनीथिंग जो कि बाद में आया है, टर्शरी सेक्टर जो कि लास्ट में आया है। टर्शरी डिपॉजिट्स, टर्शरी कोल, वो कोल जो कि बाद में फॉर्म हुआ, जो कि उतना पुराना नहीं है, दैट इज व्हाई द वर्ड टर्शरी। गोंडवाना, क्योंकि ये गोंडवाना प्लेट थी जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड उसका पार्ट है, दैट इज व्हाई दिस आर कॉल्ड गोंडवाना डिपॉजिट्स। ओके, गोंडवाना डिपॉजिट्स कहाँ है? ये दामोदर वैली में है। दामोदर रिवर कहाँ फ्लो करती है? ये वैली कहाँ पर है? दिस इज इन दिस रीजन झारखंड एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दामोदर वैली, वहीं पर है। एंड इसी एरिया में ये गोंडवाना डिपॉजिट्स है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो आई रिटन रानीगंज फर्स्ट, लेकिन सबसे इंडिया का लार्जेस्ट कोल फील्ड इज झारिया, दैट इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड। सबसे ज़्यादा कोल वहीं से निकलता है। ये इसी बेल्ट का हिस्सा है, दामोदर वैली में है। ओके, सो झारिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह ये इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं इस एरिया के। ये गोंडवाना डिपॉजिट्स हैं, ये वेस्ट बंगाल एंड झारखंड बेल्ट में है। एंड यहाँ के जो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो हैं झारिया, रानीगंज, बोकारो एंड गिरिडीह। टर्शरी डिपॉजिट्स नॉर्थ ईस्ट में है, मेनली इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। ओके, सो दीज आर द स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे टर्शरी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। एंड लिग्नाइट कोल जो है वो तमिलनाडु में भी पाया जाता है। नईवेली वहाँ पर कोल माइन है विच इज़ पॉपुलर फॉर लिग्नाइट। इंडिया में ज़्यादातर जो कोल है 80% ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया इज बिटुमिनस, जो सेकेंड क्वालिटी का कोल है। एंथ्रासाइट कमी है, कहीं पर भी हो एंथ्रासाइट कमी होता है, वो बेस्ट क्वालिटी कोल है। एंड सबसे सेकेंड क्वालिटी जो है बिटुमिनस। तो इंडिया में एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा कोल है इंडिया में, बिटुमिनस क्वालिटी है ये। एंड दैट टू इट इज नॉन कोकिंग ग्रेड, नॉन कोकिंग ग्रेड कोल है। नॉन कोकिंग ग्रेड का मतलब है इट इज यूज्ड फॉर थर्मल जनरेशन, फॉर स्मेल्टिंग पर्पसेस। ओके, ये रेजिड्यू बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम नॉन कोकिंग ग्रेड कहते हैं। कोकिंग, नॉन कोकिंग ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। वी आर नॉट इनटू अ साइंस क्लास, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस, बट नॉन कोकिंग ग्रेड इज कंसिडर्ड बेटर। ये इससे ऐश में कन्वर्ट हो जाता है जलने के बाद। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, ओके, लाइक फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड ऑल। ओके, so that is non-coking grade. Tertiary coal occurs in Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland. But before that, coal की जो fields से talked about झारखंड and बंगाल की belt है, वहाँ पर ये झारिया, बोकारो, गिरिडीह, रानीगंज, one more is given, that is करणपुरा, ये भी इसी एरिया में है। Okay, in this area. Now Jharia is the largest coal field that you have to remember, followed by Raniganj. Raniganj is the second largest coal field. Okay, the most important coal mining centers, अब अगर हम देखें तो ये वो coal mining centers हैं। These are important as far as math question is important. Math questions are concerned, very important. Okay, you cannot ignore them. You need to know कि कौन से coal mine किस state में है. So you have to remember them by along with the state name. Okay, तो ये important coal mining centers हैं, not that वो नहीं है, वो सबसे important है। Okay, you must know कि कहाँ पर झारिया है, कहाँ रानीगंज है, कहाँ गिरिडीह है, कहाँ पर बोकारो है। Okay, ये पार्ट है इस झारखंड बंगाल कोल बेल्ट की, बट ये बाकी जगह पर है। एमपी में सिंगरौली एमपी में है, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तलचर इन उड़ीसा, चांदावारदा एंड कामते इन महाराष्ट्र, सिंगरेनी and Singrauli, please do not get confused. Singareni is in Telangana and Singrauli is in Madhya Pradesh. पांडुर ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है। So you'll have to see on the map, and this map on page number 79 where coal fields and coal mines have been given. Coal field एक large area होता है, coal mine specific areas होते हैं। Okay, so coal field वहाँ पे marked है
and different coal mines are there. If you see Bokaro, Raniganj, Jharia, एकदम एक ही तरह एक ही जगह में दिख रहा है, बट अलग अलग स्टेट्स में है. रानीगंज is in West Bengal, Jharia and Bokaro are in Jharkhand, Talcher in Talcher is in, here it is being shown in Andhra Pradesh. Okay, let me, sorry, Odisha. Have I written right here? Yes, Talcher is in Odisha. Sorry. So Talcher is in Odisha, and that is why these maps are important, these political maps. Okay, when you are marking, you have to be very sure that you are marking in the right state. Okay, don't get confused by Telangana, Chhattisgarh. These are new states, so don't get confused by these states. Even Jharkhand. Okay, so in Telangana we see this Korba is in Chhattisgarh, and in Telangana we have Singareni. Okay, so you have to practice these maps, only then it becomes very clear. So I'll repeat this. These are the most important coal mining centers, and you can learn them state wise, and when you mark them like Singareni, you make sure that it is an MP, even though it is on the border lines. Okay, Korba, Bokaro, Jharia, Raniganj, Talcher, I'm sure you will not get confused. Odisha में ही है, but Jharia, Bokaro, Raniganj ये बहुत पास हैं, but two are in Jharkhand. Bokaro and Jharia, they are in Jharkhand. Raniganj, it is in West Bengal, and Korba is in Chhattisgarh. Singrauli is in Madhya Pradesh, and Singareni, that is here in Telangana. Okay. Now, as far as the mark that is concerned, now Singareni, it is mentioned as in Telangana, but if you see the triangle that has been marked, it is marked in Andhra Pradesh. Okay, so we'll have to check this whether Singareni will be marked in Andhra Pradesh or in Telangana. Telangana is a new state which has come up, so it's just on the border, but still we need to be sure कि हमें कहाँ mark करना है. Singareni has to be marked in Andhra Pradesh or it has to be marked in Telangana. In map it is showing Andhra Pradesh, but here it is written as Telangana. Okay, I'll make that clear, don't worry. Okay, Pandur is in Andhra Pradesh. Now in Singareni, one important aspect of the safety of miners, जब miners किसी coal mine में अंदर जाते हैं, there is lot of carbon dioxide, lot of gases which are harmful to the health of these miners. As they go deeper and deeper, the risk becomes very heavy. There are instruments to indicate the concentration of a particular gas, and those are used in mines so that you know whether it's safe for the miners to go or not. Most of the time miners also use those gas masks, but security is of prime concern. But here is a unique example in Singareni. Singareni में एक यूनिक तरीके से गैस के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, और यहाँ पे कैनरीज को यूज किया जाता है. कैनरीज आर स्मॉल बर्ड्स. इन कैनरीज को वो ले जाते हैं, कैनरीज के केज को ले जाते हैं अपने साथ, एंड इन कैनरीज बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, और इनके बिहेवियर से उन्हें पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ डेंजरस और इट इज़ सेफ टू गो इनसाइड द माइंस एंड वर्क. एंड ये माइंस में गैसेस का कंसंट्रेशन लेवल वेदर इट इज़ सेफ और नॉट, वो इन कैनरी से थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये कैनरीज को ले जाते हैं ये बर्ड्स को, एंड वहाँ पे बर्ड्स इफ दे फील अनईजी, सो व्हाट दे डू, आई जस्ट read it out for you. This is on page number 78. At Singareni, canneries to miners rescue. So canneries बचाते हैं miners को काफ़ी हद तक, and how they do it वो देखते हैं. Singareni collieries, collieries आज जहाँ से कोल निकलता है, the country's premier coal production company, number 1 coal company है इंडिया की Singareni collieries,
and still uses candies to detect the presence of deadly carbon monoxide in underground mines. Okay, so इस carbon monoxide the gas जो कि underground mines में होती है. Miners collapse and often die even if small quantities of highly poisonous carbon dioxide are present in the air. तो अगर ये poisonous gases हैं, अगर ये का present है वहाँ पर तो माइनस बेहोश हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी. Though miners speak lovingly of the candies, the underground experience is not at all pleasant for the birds. अभी थोड़ा बर्ड्स के लिए अजीब है कि उन्हें ऐसे कंडीशंस में जाना पड़ता है, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है. When lowered into mines with CO presence, तो पहले चेक करते हैं इन बर्ड्स के अंदर इनको पहुंचाया जाता है, इनसे इनके बिहेवियर को चेक करते हैं. If the bird show distress symptoms such as ruffling of feathers, अगर वो तेजी से अपने पंख हिला रही है, and pronounced chirping, बार बार वो आवाज़ निकाल रही है, and loss of life, अगर वो मर जाती है, then obviously it is an indication that it is not safe for miners to go inside. अभी भी जबकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, we see that in Singareni collieries they still use this old method of taking candies. इन birds को ले जाते हैं and इन birds को वहाँ पर पहले check करते हैं whether the carbon monoxide level is right or not. अगर in fact right क्या वो होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो फिर वो माइनस के लिए डेंजरस है. ओके, these reactions occur even if 0.1% of carbon oxide is present in the air. तो थोड़ा सा भी present है तो ये उसे सेंस कर लेती हैं birds. Birds are very sensitive. We are seeing that because of pollution, a lot of birds we don't get to see. You must have noticed sparrows, but they are missing now. Crows and also a lot of birds have gone missing. Their numbers have dwindled because of pollution. तो अगर यहाँ पर gases हैं, then birds will not survive, and that is how they indicate. तो वो बहुत छोटा सा percentage of ये dangerous gases उसे detect कर लेती हैं. Okay, if the content is even 0.3%, the bird shows immediate distress and falls off its perch in 2 to 3 minutes. तो अगर 0.3% भी है तब भी वो बर्ड यहाँ पे अनइजी फील करती है और उसकी डेथ हो जाती है. The case of birds is a good indicator in air containing more than 0.15% carbon dioxide, said a coal miner. तो coal miners को लगता है कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है और many these candies have saved the lives of their ancestors. Even though sophisticated technology is available, the sophisticated handheld CO detectors introduced by company can detect CO concentrations from as low as 10 ppm to as high as 1000 ppm. तो instruments हैं handheld, हाथ में obviously होल्ड करने वाले ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि गैसेस के कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं. बट माइनर्स मे बी दे आर नॉट एजुकेटेड, या फिर उनका ऐसा मानना है क्योंकि पास्ट में उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो एंसेस्टर्स होंगे उनकी कई बार जान बच चुकी होगी इन कैमरीज की वजह से. दैट इज़ व्हाई दे स्टिल हैव फेथ इन दीज कैमरीज एंड दे ऑब्वियसली यूज कैमरीज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज poisonous gases. Okay, so, but despite this, the miners trust the birds who have saved the lives of several of their predecessors. ये extract important है. Okay, and ये Deccan Chronicle में 2006 में ये article छपा था. So we don't know whether they are using it right now also or not, but in 2006 yes they were using it. Now, coal is an important mineral जिससे हमें एनर्जी मिलती है. एंड नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इन इंडिया हमारी जितनी नीड्स है उसके हिसाब से बहुत कम है हमारे पास. सबसे पहले जो पेट्रोल निकलना शुरू हुआ दैट वाज जो ऑयल फील्ड है हमारा सबसे पुराना सबसे पहला, दैट इज इन डिगबोई विच इज़ इन असम. असम में और भी हैं, नाहरकटिया, मोरान, हुरीजान, ये वहाँ के इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं. बट यहाँ से ऑयल उतना नहीं निकलता है अब. ओके, अब जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल पेट्रोल है दैट इज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एरिया. मुंबई हाई
ये वो एरिया है दैट इज ऑब्वियसली इनसाइड द सी एंड मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा इंडिया का पेट्रोल आता है. So crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. It is an essential source of energy for all internal combustion engines in automobiles, railways and aircrafts. Its numerous byproducts इसके बहुत सारे बनते हैं are processed in petrochemical industries such as fertilizers, synthetic rubber. तो ये केवल एक फ्यूल की तरह नहीं है, इसमें और जगह और में भी काम होता है इसका, लाइक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक्स. सो यू नो के बहुत यूजेस हैं. ओके, एंड पेट्रोलियम इज आल्सो रिफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली एंड बहुत रेयर है, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है. Crude petroleum occurs in sedimentary rocks in the tertiary period. और tertiary period में ये sedimentary rocks में oil form होता है. Oil exploration and production was systematically taken up from the Oil India Natural Gas Commission. Okay, ये ONGC इन्होंने oil को इंडिया में ढूंढना शुरू किया. Till then, डिगबोई ये 1956 के बाद इन्होंने obviously ढूंढना शुरू किया. उससे पहले हम देखते हैं डिगबोई इन असम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट द सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956. तो 1956 को हम देख रहे हैं, हम केवल रिलाय कर रहे थे एक ही ऑयल फील्ड पे, तो उतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं थी होने की, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स वगैरह अपने नहीं थे. बट देन डिगबोई हमारा पहला था, तब तक डिगबोई से ही हम ऑयल निकाल रहे थे. दैट वाज ऑब्वियसली ब्रिटिश टाइम्स, जब डिगबोई से ऑयल निकलना शुरू हुआ. In recent years, new oil deposits have also been found in the western and eastern parts of the country. In Assam, हम देखें तो डिगबोई, नाहरकटिया and मोरान are important oil producing areas. The major oil fields of Gujarat are अंकलेश्वर, ये बहुत important oil field है, गुजरात में है. मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर अंकलेश्वर है, जहाँ से ऑयल इंडिया का आता है. कलोल, महसाना, Navagam, Kosamba and Lebanese. Kalol and Ankleshwar and Mumbai High, these you must have started, but few new names here we are seeing have been added. That is Mehsana. Yes, Mehsana is also not new, but Navagam, Kosamba and Lebanese probably ये नहीं सुने होंगे आपने. Mumbai High lies 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई. मुंबई से 160 किलोमीटर इनसाइड द सी है ये मुंबई हाई. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1973 की इसके बेसिन में, इसके नीचे सी के नीचे ऑयल है. एंड प्रोडक्शन कमेंस्ड इन 1976. ONGC हैव आल्सो फाउंड, इसको एक्सप्लोर किया, एंड दिस वाज अलॉन्ग विद द रिलायंस कंपनी. एंड कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में भी ऑयल मिला है. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी वेल्स इज क्रूड. उसे क्रूड कहते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है, फिर उसे रिफाइनरीज भेजा जाता है, वहाँ रिफाइन किया जाता है, उसमें से गंदगी को अलग निकाल लेते हैं, जिसे हम तारकोल कहते हैं, जो कि रोड बनाने के काम आता है. ओके, तो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसे रिफाइन करने की ज़रूरत है, इसीलिए रिफाइनरीज हैं इंडिया में. and field based and market based refineries हैं. डिगबोई is an example of field based and Barauni is an example of market based refinery. Okay, market based means यहाँ पर अगर रिफाइन होता है, मार्केट में सप्लाई होता है. डिगबोई ऑब्वियसली फील्ड बेस्ड है, जहाँ वहीं पर ऑयल निकल रहा है वहीं रिफाइन हो रहा है. ओके, एंड बरौनी एंड मथुरा ये मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज हैं. इनके पास अपना ऑयल नहीं है, बाकी रिफाइनरी से बाकी जगह से ऑयल आता है यहाँ पर, और फिर से रिफाइन करके ये मार्केट में आगे चला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट नेचुरल गैस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में हम न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे. सोलर, टाइडल, जियोथर्मल. आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी ज़्यादा नया है. You have already read them, but again a repetition. The entire chapter seems to be a repetition of class 10. Okay, so we'll cover this in the next class. We'll be learning about natural gas and the non-conventional sources of energy,
And यहाँ पर I don't know what they mentioned nuclear as conventional. Now here they have put it in nuclear energy resources in a non-conventional. So that is always a confusion. Sometimes you read it in conventional because इसका use काफी हो रहा है. Every country is using it. So this is more like a conventional sources of energy है वो. Okay. I have given you a project and here you see powerful idea floating windmills का एक photograph दिया गया है. Power of the future wind turbines in somewhere in Netherlands. Okay, you see these wind turbines. Okay, and most of these wind turbines you see now being placed inside the sea where the wind speed is high and they generate a lot of power. That is the project that we are doing. So that has been mentioned here also. Conservation of mineral resources, again an important topic. So we'll be covering them in the next class. So today we learned about coal, and it is an important energy source. India has got abundant coal. सबसे ज़्यादा coal हमारे पास जो है वो bituminous ही है, and 80% of the coal वो non-coking grade का है. मतलब हम उसे thermal power plants में and smelting of iron and बाकी smelting purposes में उसे use कर सकते हैं. It is valuable and दो तरह के डिपॉजिट्स में वो पाए जाते हैं. कोल डिपॉजिट्स में and tertiary deposits में. A long line of coal mines and coal fields, again a part of the map that you should be practicing because that is where it becomes very important. Okay, so thank you. That's all in this class.